Hello guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about MEG09 paper की तैयारी करनी है within 1 month. And what are the topics? Seriously, what are the topics we need to focus on? मतलब क्या करें और क्या छोड़ दें. सीरियसली कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर पेपर में जो हमें कंफर्म करनी होती हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं. तो we're going to discuss that one in this today class, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. And make sure that you're going to subscribe the channel अगर अभी तक नहीं किया तो, because after subscribing the channel you can access the videos. तो शुरू करते हैं क्लास को. The first thing that comes to mind regarding the Australian literature says MEG09. अब इसमें कई सारी चीजें जो हाईलाइट करती हैं, पॉइंट्स को डील करती हैं. तो पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को, उसके बाद हम जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स, मींस एग्जाम क्वेश्चंस. अब एग्जाम क्वेश्चन यहाँ तो नहीं दिख रहे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो उसमें पेन और रजिस्टर साथ में रखना क्योंकि वो आप लिखने वाले हैं. शुरू करते हैं क्लास को. द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इन माइंड इज ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. सही, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में क्या चेंजेस आए, क्या बेसिक्स थे, व्हाट आर द बेसिक डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन 18 to 19 सेंचुरी. क्या वो सारे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, वो सारे क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ अभी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि हम अभी आने वाले हैं. एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, द एबॉर्जिकल राइटिंग. सो व्हाट इज एबॉर्जिकल राइटिंग? सर फोक लिटरेचर करते हैं हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम MEG16 की बात करते हैं, हम फोक लिटरेचर की बात करते हैं. सेम वहाँ पे एबॉर्जिनल राइटिंग इंपॉर्टेंट है. इसका एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर मिलता है, इस पेपर में तो कंफर्म मिलता है. एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, द पोएट्री. सर पोएट्री काफी बड़ी है, इस पेपर में पोएट्री का बहुत डोमिनेंस है. एंड रियली वांट यू गाइस टू वर्क ऑन दिस पोएट्री टॉपिक्स. एंड देन वी आर हैविंग द स्टोरी लाइन्स, द ड्रॉवर्स वाइफ, द चूजन वेसल एंड द इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट फिक्शन. हाँ, ये दोनों शॉर्ट फिक्शन का ही पार्ट है, तो यहाँ हमें क्लियर करना है शॉर्ट फिक्शंस. एंड देन द रिमूवलिस्ट, रिमेम्बरिंग बेबीलोन एंड द वॉस. कंफर्म क्वेश्चन होगा इन तीन से, पहले क्लियर कर लेना. 100% तीन के तीन मिलेंगे. देन इन दो में से कोई एक मिलेगा, पोइट्री कंफर्म मिलेगी, इनमें से एक 100% मिलेगा. अब क्या करना है, क्या छोड़ना है, डिसीजन योर्स, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स. तो आई होप अभी तक सबने पेन और रजिस्टर निकाल लिया होगा, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आएंगे. दूसरे कहाँ मिलेंगे इनके आंसर्स? यू गेट इन नोट्स. नोट्स होने चाहिए यहाँ पे, इनके पास नहीं है, पीछे नंबर दिया गया, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं. नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते यार, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको. एंड देन यू कैन फॉलो माय इंस्टा ID, क्योंकि वहाँ मैं सारे एक्सपेक्ट क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ. कम टू नेक्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप पेन चल रहा है. How did the colonial ballads, I repeat the question, how did the colonial ballads tradition become representative of distinctive Australian perspectives? This is something very important, मतलब हमें ऑन टिप होना चाहिए. तो कहता है how did the colonial ballads tradition become a representative of the distinct Australian perspectives? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, लिख भी लिया, शायद आंसर आता होगा, डेफिनेटली आता होगा, आई नो दैट. Come next one. Discuss the themes and trends of early Australian literature. So early Australian literature, मैंने कहा था यार Australian literature का ही पार्ट होंगे. तो पहला क्वेश्चन आ गया, सर हम पर्सपेक्टिव्स की बात की. दूसरा क्या, early Australian literature के ट्रेंड्स और थीम्स क्या थे. Come to next question. What is the role of history in the study of Australian literature? अब हिस्ट्री का रोल क्या है? What is the role of history in the study of Australian literature? I'll come to the next question. The outcome of the links. I repeat, the outcome of the links between land and history. The outcome of the links between land and history of Australia have had results. Have had results that are political and social culture. I repeat, that are political and social culture. Discuss. Straightforward question था, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी. The outcome of the links between land and history of Australia have had results that are political and social culture. Discuss. Jump to the next question. Discuss the different aspects of women writing in Australia. I'll clear this question to you guys. Discuss the different aspects of women writing in Australia. Women writing क्या है ऑस्ट्रेलिया में, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको हाईलाइट किया गया. Jump to the next question. Discuss the concept of multiculturalism. Should I need to clear this one? Discuss the concept of multiculturalism with the reference of any text of your choice.
अब मल्टीकल्चरलिज्म को हाईलाइट करता है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. अब मैं किसी भी टेस्ट को लूँगा उसको हाईलाइट करूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट. ये था लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सेगमेंट. तो आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चंस ऑन टिप लिख लिए. फर्स्ट 6 come to the 7th question. Now we're going to work out the aboriginal writings. Discuss the significance of aboriginal writings as a part of mainstream Australian literature. Yeah, it's a mainstream Australian literature. Jump to next question. In what ways the aboriginal lifestyle in tune the environment? Discuss. Next one. The oral tradition of aborigines and Australia are a store of information about the tradition culture of these people. Somehow it is very true. I repeat the question. The oral tradition of the Aborigines in Australia are a store of information about the tradition and culture of these people. Discuss. Jump to the poetry section. Sir, poetry शुरू हो गई. Poetry क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तो आप लोग लिख लेना. Poetry जो बोलूँगा उसको ऑन टिप कर लेना. क्या the poem of the candle appeals to you the most? अब कैंडल्स की पोएट्री. ये कैंडल कौन है सर? एक पोएट है. अब ये हमें बताओ जी कि इसकी पोएट्रीज कौन सी हैं. कहता है which poems of candle appeals to you the most. Next one, what are the social problems that Cambridge tackles in her poetry? अब Cambridge second poet कौन आ गया? Cambridge. What are the social problems that Cambridge tackles in her poetry? Reference to the poem you have read in your course. Next one we are having. What are the distinct features of the 19th century Australian poetry? सर ये features of the 19th century Australian poetry. इसको स्टार लिख के लगाना, स्टार करके. तो ये आपकी ऑन टिप पे होना चाहिए. कहता what are the distinct features of the 19th century Australian poetry? Clarify with the illustrations. Next, discuss Slasher's use of landscape referring to the poem you may have read. So एक और poet आ गया Slasher. Come next one. Critically analyze A.D. Hope. ये A.D. Hope ऑन टिप कर लेना यार, भूलना मत प्लीज, इसको मत भूलना. Critically analyze A.D. Hope's poem Australia. I repeat, Australia, and accounts for the reason for its popularity. And the next one, how does contemporary Australian poetry challenge the redefine the concept of Australianness? I should read this question again. कहता how does contemporary Australian poetry challenge the redefine the concept of Australianness? Next one, in what way does Rosemary Dawson's poem Cock Crow express the feminist viewpoint? And the next we are having Les Murray in Australia leading poet. Discuss his contribution in Australian poetry. सर Les Murray को क्लियर करना, उसका contribution बताना है हमने poetry के अंदर. And then we are having the next one. Is the night orbit, I repeat, is the night orbit a forward looking or backward looking poet? इसको लिख लो, कौन सी पोएट्री है? The night orbit. Is the night orbit forward looking or backward looking poem? Discuss. Time to jump to the Drawer Wives we are having. In the short story, again the short story we are having, the Drawer's wife portrays the hardship of life in bush of the Australia from a woman perspectives. यहाँ पे woman के perspectives को highlight किया गया है, जो आपको पूरा mention करना है. The short story, the Drawer's wife portrays the hardship of the life in a bush of the Australia from a woman's perspective. Explain. Next we are having, explain the dictomony of war. This is the good question. Explain the dictomony of the war or goddesses, the reference to chosen vessel. The chosen vessel. We are having the next question. Discuss the seizure of the syrups. Discuss the seizure of the syrups in terms of both theme and style. Next we are having, how would you compare the fiction of Marcus Clarke with that of Henry Lawson? This is the most expected question that will come in paper. How would you compare the fiction of Marcus Clarke and that of Henry Lawson? Explain. Next question. What are the main features of Australian short fiction written in the 19th century? I told you earlier. The short fiction and the 19th century, the change that take place. Next one. Comment on the title of the play, The Removed List. नहीं छोड़ सकते इसको, मैंने कहा ना ये confirm paper में आना ही आना है. How appropriate the title of the play, The Removed List? Justify. Same question है, exactly same. What are the major themes of the play, The Removed List? अब इसको बताना है आपको. And then I jump to the next part, that is Remembering Babylon. Write a note on the structure of the novel, The Remembering Babylon.
structure of the novel. How does Remembering Babylon show Maloff's concern with the failure of language? And I'll come to the next question. Comment on the major themes and concerns of David Maloff in the novel Remembering Babylon. And again from the Babylon, how is the remove list? I repeat, the remove list. So उसको jump करते हैं. How is the remove list to be read as a play about individuals as a critique of Australian society? So yeah, it is a play of critique of the Australian society. What do you consider the main theme of the Remembering Babylon? Elaborate. Now I need to come to the last question. Sir, कौन सा? Was पे ना हमारे पास इसके 4 क्वेश्चन को डील करेंगे हम. First, love and journey are the intervening theme in was. Love and journey are the intervening themes in the was. Discuss. Next one, discuss different features of human relationship. Discuss the different features of human relationship in was. And the next one we are having, the central protagonist of the Patrick White was is Australia. Do you agree? Comment. And the last, would it be right to call was as an emotional complex novel? Yeah, somehow it is emotional complex novel. तो यार ये थे वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं किसके लिए? For MEG09 the Australian literature. I hope you all are going to do these questions. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. All the best.